आपने लगा लिया ये? ठीक है। Yes. हाँ, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिस्टर प्रणव, प्लीज कम। Good morning, sir. मॉर्निंग। Good morning. Good morning, sir. बैठो। Pranav, Kozhikode is very far off from Ludhiana. Why you want to come for this program? Yes, sir. It is very far, but if I come to IIM Kozhikode, I will be able to learn students, among students coming from various parts of the country, and also I will be able to learn from their experiences. Also, the faculty of IIM Kozhikode is very experienced, and the same professors who have taught the MBA students for years will be teaching us. So it will be a great opportunity to learn from them. That's all. You need to also talk about the curriculum. Okay. That is most important. Yes. We must start with the curriculum. So, have you gone through the curriculum? Not What all they will be teaching you in BMS? So in majors they have all subjects like finance, HR, I'm not sure. And in minors it is AI, AI, public policy, data analytics, data machine sciences, learning. फिर ये सब बोलने का ना यार। Yes, sir. मेरे भाई जो Some majors बोले minors. whatever you have to just say subjects. You don't qualify minor or major. You need to say which are something unique in this program. Poetry and literature is हाँ, it's a amalgamation. कितनी बार हमने बात की है अंदर IIM के लिए? It's amalgamation of arts, commerce, management and tech subjects. सबसे पहले स्टार्ट ही यहाँ से करना है आपने। ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन ऐसे इनसे पूछ रहा हूँ तो आपने ये सोचना है आपसे पूछा गया है। व्हाट शुड बी योर आंसर? पिछली वीडियो देखी है सारी? कब है इंटरव्यू? अभी है दिन, चलो 13 दिन है, 13 दिन दे दिए उन्होंने तैयारी करने के लिए। उनको पता था लहर ने जागना है तो कॉल आ जानी है। चलो, सो यू देखें बच्चा, लर्निंग फ्रॉम पीयर्स ये सिम्बोसिस में भी हो जाएगा, नरसिम्हन जी में भी हो जाएगा। एक्सपीरियंस फैकल्टी इज गुड, बट व्हाट इज द यूनिक थिंग इज करिकुलम। सो करिकुलम, फिर आ जाएगा पीयर ग्रुप, फैकल्टी। ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good morning, sir. I am Pranav Garg. I belong to Ludhiana, Punjab, which is the industrial hub of Punjab and is famous for. सुनो सुनो, अभी एक इशू है। हाँ, आई एम प्रणव गर्ग, ये वो, आई एम लुधियाना। एनर्जी 20%, शोल्डर्स अप लाइक दिस, हाँ, चेस्ट अप, चेस्ट फ्रंट, आर्मी ऑफिसर्स टाइप। अभी बैठे हुए में 50% इम्प्रूवमेंट है, तो जब बोलोगे तो और होएगी। Yes. सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good morning, sir. I am Pranav Garg. I belong to Ludhiana, Punjab, which is the industrial hub of Punjab. It is famous for its hosiery and cycle parts. My father is a businessman and my mother is a homemaker. I recently completed my class 12th with 97%, in which I had commerce stream with core maths. As far as my extracurriculars are concerned, I have won a bronze medal in in an Olympiad organized by IOF, and a gold medal of excellence in the Olympiad organized by SOF. My hobbies are playing chess. So you can expect some questions about chess. Who's your role model? We have discussed about it in the class. मैं ग्रुप में भी डाला। हाँ, अभी तक नहीं किया तैयारी। कब है आपकी इंटरव्यू? 16। तो यार तैयारी 10 तारीख तक पूरी करो जी, आप भी लहर भी। उसके बाद एक मॉक होगी जो फाइनल होगी। What you know about AI so far? How AI works? What is the future of AI? So AI will definitely be used for doing most of the works, and it may take up some jobs which are repetitive in nature. What is all is covered under
डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस एनालिटिक्स, ये भी नहीं पढ़ा होगा तो। फिर क्या फायदा राजा, इतनी देर से अपन आ रहे हैं, हमको पता था इसके आने के कॉल के चांस हैं। नेवर माइंड। कैसे हो इतना लेट? वो आपको बताया, बैठो बैग बाहर रख दो, वो उधर रख दो कोने में वहाँ। तो ये बिजनेस एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स, ये सब पढ़ने का पड़ेगा। व्हाट इज रेशियो एनालिसिस? Ratio analysis is a way by which the businesses can know about their efficiency of managing operations. The major ratios are the most important ratio is debt to equity, by which we can measure about uh, about the portion of debt which is used, proportion of debt which is Who used won? in the total. Who won recent Kerala elections? It was Mr. K.D. Satishan. Which two parties were in the joint venture? It was He can even ask you what share. Prepare it, in the next class we'll discuss. this, I guess, DMK and coalition No, with no, Indian no, no, National no, no. Congress. Kerala, not Tamil Nadu. LDF something is there. UDF or It's LDF. collision with Congress, I know, but Ah. not sure about the first party. INC and UDF. UDF ही बोला था। UDF plus Congress. They won. LDF is left party. So what happened to the Tamil Nadu, वो भी पूछ सकते हैं। All latest elections you also cover, I will also cover. In the next class I will give you bullet points. Okay. But आप भी लेके आओ। Yes. ये भी पूछ सकता है, which all states went to election recently? Which all states went to elections recently? बताओ। West Bengal, Kerala, हाँ, केरला and Tamil Nadu. नहीं, और भी थी। Karnataka. तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, मुझे लग रहा था एक और है, असम। असम तो था ही, एक और है। तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, इनका पौंडीचेरी। पौंडीचेरी आ रहा था दिमाग में, नॉट श्योर। पौंडीचेरी 5 हो गई। What Ludhiana is famous for? It's famous for its it's the largest. It has the largest Asian cycle brand, which is Hero Cycles, and it is also famous for hosiery. What is happening in Ludhiana these days? Only in Ludhiana. अभी तो लुधियाना Not पहुंचा ना। what Ludhiana was. Punjab. Not क्या बात करते हो, sure जहाँ about रहते हो वो नहीं पता तो मुश्किल हो जाएगी ना। एयरपोर्ट हमने कितनी बार Yes, sir, बात की airport. है क्लास में।
Railway station revamping. Railway station revamping. Then Delhi Katra. Delhi Katra project underway. It's likely to be completed till Ludhiana within next 2 to 3 months. Who is Finance Minister of Punjab? It is Harjot Singh Chima. Harpreet Singh Harpreet Chima. Singh Chima, sorry. Who is Commerce Minister of India? I'm not. पीयूष गोयल है. अभी इतनी वो कर रहा है एग्रीमेंट्स. Where do you see yourselves 10 years down the line? 10 years down the line, I see myself completing a BMS degree or an MBA degree from a top B school, and then either entering the corporate world or starting a company of my own. Come again? So 10 years down the line, I see myself completing a BMS or an MBA degree from a top B school, and probably either entering the corporate sector or यही starting करवाना. a company of my own. देखिए 4 साल में BMS हो जाएगी. हाँ जी. अगर आप चाहो तो 3 इयर्स में BBA हो जाएगी. पता है ना? Yes sir. तो आप BBA के बाद 2 इयर्स की MBA कर लो या 2 इयर्स का वर्क एक्स भी ले लो. Yes sir. तो भी आपके 7 इयर्स हुए. Yes sir. तो 3 इयर्स में आप एंटर थोड़ा करोगे. आई वुड हैव ग्रोन बाय 10 इयर्स. MBA का बीच में मेंशन ही मत करो. Sir, by 10 years, I think I would have grown to middle management level. Middle management level position in a company of repute, where I will be making direct contribution. और किस फील्ड में? In the field of, थोड़ा आइडिया होना चाहिए. So I have not yet decided, but I am inclined more towards finance. Finance. बस in the field of finance. Sir, तो अगर फाइनेंस में मैं तो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. कोई बात नहीं, पूछेंगे आप. और भी कुछ भी बोलोगे. वो which is your favorite subject? Accountancy. तो पूछो accountancy question. What are the different methods for calculating depreciation? There are two methods: fixed line method and written down value method. Which one is considered better or more realistic? Written down value is considered mostly more realistic, because in the straight line method, after the useful life has been done, the value of the asset becomes zero. However, that is not the case in the actual world. The value of an asset will never become zero. However, in written down value method, the depreciation is charged proportionately on the written down value, which is for the opening balance. What are the responsibilities of SEBI? So SEBI controls insider trading. Insider trading is just one of the very small fraudulent macro level. सबसे पहले जैसे RBI को पूछेंगे तो क्या बोलोगे? RBI का क्या रोल है? Controller of money supply and so similarly banks. SEBI is the regulator for stock markets. Yes. Stock market. It sets all the rules, regulations, framework for this thing. What are the top roles of RBI? So sorry. Top roles of RBI. RBI के functions main. Controller of money supply, sole issue of authority of issuing currency, regulates the commercial banks. Also, it provides banking services to the government. What all is covered under RBI's credit and monetary policy? So RBI credit and monetary policy comprises of qualitative and quantitative measures. In the quantitative measures, it has cash, it has bank rate, repo rate, reverse repo rate, etc. And in the qualitative
characteristics. It has moral suasion. I'm not able to recall that. If RBI wants to decrease the liquidity, what will it do? If RBI wants to decrease the liquidity, it can increase the bank rate, which will make the borrowing capacity of the commercial banks less, as they will have to pay more interest for getting the same amount of loan. So commercial banks would also further increase the rate at which they provide loans to the people, and so people would be discouraged to take loans from the commercial bank, and hence the money supply would be Your views about Iran USA conflict? not read about हाँ? that. I'm not read about that. गलत बात है, कितनी बार तो क्लास में डिस्कशन हो गया। Yes, sir. मेरे सर भाई वो ऐसे नहीं, पूरा भी वो पोर्टल पे करना है मैंने। पोर्टल छोड़ो, ये तो Yes, sir. क्लास में डिस्कस हुआ, बुलेट पॉइंट्स पे लिखाए हुए हैं। I'm not able to. दो बार और मिनिमम, दो तीन बार और मॉक इंटरव्यू देना। अभी तो फर्स्ट है, ऊपर ऊपर से कर रहा हूँ। वी विल हैव टू गो इन डेप्थ। कोई और क्वेश्चंस कॉमर्स के? What is the law of diminishing marginal Law of diminishing marginal return or utility returns. So law of diminishing returns state that uh, after the resources have been utilized at a certain after a certain rate, when the more and more inputs are provided, the total production will fall, and the marginal product will also get negative. What is perfect competition versus monopoly? Perfect competition is where all the firms have an equal all the firms produce a homogeneous product, uh, and in a monopoly, a single firm is there that controls the entire market, but in the perfect competition there can be multiple firms. और कोई? What is difference between a manager and a leader? A leader is someone who gets the work done by motivating the employees. Uh, However, a manager is person who just commands the person to get the work done. What else? A leader can get the best out of his employees by just motivating him and बेसिकली हमने डिस्कस किया हुआ पहली क्लासेस में भी कि लीडर गेट्स द वर्क डन थ्रू इंस्पिरेशन। yes, sir. इंस्पिरेशन। मैनेजर गेट्स द वर्क डन थ्रू कंट्रोल। Yes, sir. थ्रू कंट्रोल ऑब्लिक डिसिप्लिनरी टूल्स। Yes, sir. कि नहीं करोगे तो निकाल दिए जाओगे, सैक कर दिए जाओगे। ही लीडर गाइड्स थ्रू सेटिंग एन एग्जांपल। सेटिंग एन एग्जांपल। लीडर is mostly autocratic. Sorry, manager gets the work done in autocratic. Yes. What are NHIA bonds? Not. देखो भाई, Yes. बहुत, और इसके क्या आजकल परसेंटेज दे रही है रिटर्न, गवर्नमेंट ऑफर देती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी में पीपल इन्वेस्ट लाइक दे इन्वेस्ट इन FD. What are other different bonds? What are other different instruments पूछ लेगा, पता है कुछ? Instruments that are traded
in on stock market? पता है कि नहीं? पता लगाओ. How is Indian economy doing? Indian economy is doing great as it is the fourth largest economy. The economy, the GDP of the country has been growing with around 4 to 5%. However, the per capita income of most of the people is very low. How much it is? It is around 25,000. And what is the rank of India? 135. ये बोलो ना यार, दोनों चीजें नहीं बोलोगे, जनरल बात करोगे, ग्लोबल ज्ञान से नहीं होनी सिलेक्शन. ग्लोबल ज्ञान, गोली ज्ञान 99.9% होने देने. If you give any one or two specific figure wala points, you will be done. Your selection will be 90% assured. How is Pranav as a person? Pranav as a person is sincere, disciplined, and say obedient. ठीक है, जो है वो बताना. एग्जाम्पल पूछेगा तो बता देना. मतलब कैसे, मतलब जैसे स्कूल में tell us somewhere you were disciplined. discipline in preparation of class. Okay. Your friends would be finding you trustworthy, yes or no? They will Yes, sir. share their. Yes. So that is very good trait to share. My friends tell me that my friends find me trustworthy, and they can share, lot of their personal difficulties, etc. with me, and I think I'm good at counseling, motivating others. Your single biggest achievement so far? So I'm not sure which is the single biggest. Can be academics में gold Olympiad medal or कौन सी class क्लास में था वो? in 12th having gold medal. तो बोलो. That was at school level. बोलते हुए भी पहले ब्रॉन्ज नहीं बोलना इंट्रोडक्शन में, पहले Sir, but गोल्ड बोलना. first 11. नहीं. जिसका रैंक बढ़ा है पहले वो बोलेंगे, हो सकता है वहां कट मार दे. But for school level पे था. व्हाटएवर, गोल्ड इज गोल्ड, Yes. ब्रॉन्ज इज सिल्वर से भी नीचे. Yes, sir. आपको क्या पता वहीं पे कट कर देंगे इंट्रोडक्शन. ओके, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट. Okay, sir. Any business news you have followed recently? बिजनेस वर्ल्ड के लिए जाना है, बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज के लिए जाना है, BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, और बिजनेस की न्यूज़ ही नहीं पढ़ रहे हो, क्या फायदा फिर. कैन मैं इतना कुछ ही, coming to the classes you will be following my instructions. 5 times economic times, 5 times Times of India, tribuneindia.com. नहीं पढ़ रहे. बड़ी सी बड़ी फिर कैसे. any other important news you have followed and your views about it? Related to Punjab. नहीं, मैंने कोई anywhere, India, world. So recently, Punjab in the 2022 elections, the AAP, the Aam Aadmi Party had promised that it would give rupees 1,000 to every woman, but it had not started that yet. It is planning to start that from July, and for So that, what are your views about this? sir, so for that, the Punjab government has set aside around 93 crore rupees from its budget. So that is just given on the basis of gender. So that should not be the case. Setting aside such a big amount, the same amount could have been utilized somewhere else in fixing the infrastructure development, or building more schools uh, and other problems which are being faced by Punjab, that is law and order, etc. What are the different forms of credit which company has?
if a company wants to get credit, which are the sources and which is better at what stage? Funds. If a company wants to raise funds, what are the different ways? So it can issue its shares to the public for subscription, or it can raise debt. So डेब्ट में काफी कोई बात आ जाता है debentures, ना. हाँ, ventures, or so शेयर्स में ही आ जाएगा. what is डिवेंचर तो शेयर्स डिवेंचर्स इज सिमिलर. डेब्ट इज लोन. loan? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वर्किंग कैपिटल, लिमिट्स एक्सेट्रा, ये सब इसमें दिए हुए हैं. वर्किंग कैपिटल क्वेश्चंस भी हैं इसमें. व्हाट इज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग? Sorry. व्हाट इज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग? नहीं आता तो गैस मारो, बोलो. Inflation accounting can mean पहली चीज अगर नहीं पता तो बोलो सर आई एम नॉट 100% श्योर, आई कैन मेक ए गैस. तो कहें हाँ, मेक ए गैस. so I'm not 100% sure, but I can make a guess. Inflation accounting can mean accounting for the different price indexes according to different years and carrying over the cost of previous years down into this financial year according to the new price index or new inflation. Projecting the consumables, projecting the cost of items will go up in the next few years, adding inflation on them. What is working capital? Working capital is the difference between the current assets and the current liabilities. How much it should be? What should be the goal of company? More should be the working capital or less? Working capital should be more, so that it Working capital should be enough to meet the day-to-day requirements and the current liabilities. Working capital should be minimized so that you have minimum money blocked in the system. Working capital is indirectly money blocked in the system in terms of finished goods at your dealer, at your stocks, at your plant. In process inventory, जो माल फंसा हुआ है, अभी बन के पैसा नहीं आया, फिर स्टोर में जो पड़ा है, आप बढ़ाते जाओ इतना इतना हर जगह, उतना ही पैसा आपका ब्लॉक हो जाए. वर्किंग कैपिटल इज इनडायरेक्टली ब्लॉक्ड मनी इन द सिस्टम. आज के रेपो रेट ये सब डिटेल में देखो, मैं भी देखूंगा. top problems faced by Punjab and solutions as per you. The law and order situation is very bad. Secondly, the infrastructure is not that good. The condition of roads is very bad, and unemployment is also a problem which is faced by Punjab. Solutions can be the infrastructure. Government should prioritize spending on development of infrastructure. For employment, they should create more employment opportunities as they did a few months or I guess year back. It is not good, Pranav. You Yes. have sat in at least 3-4 interviews. So I was preparing for JIPMAT. I was not properly prepared for it today. But my point is, when you Yes, were sir. coming for the Yes, sir. sessions, Yes, sir. you were coming to prepare for Yes, sir. interview. Yes, yes, sir. I was assuming if you are coming, you would be 80% prepared by now. Yes, You have seen at least 12 to 15 interviews, mocks. yes, sir. And in 30% of them at least we have discussed this in detail. So if we are not able to do what has been discussed in detail, how will you handle those questions where we may not be able to discuss in detail? Yes, sir. This is a macro level problem. And इंडिया की भी वही प्रॉब्लम है जो इधर की प्रॉब्लम है. आपको बोला भी गया था, ये लॉ एंड ऑर्डर वगैरह छोटी प्रॉब्लम है at present, then the bigger problem. If they ask you, tell us, are the number of cases
have the number of stealing cases etc. increased from last year to this year? How much from how much to how much? आप बता नहीं पाओगे. Yes, sir. जनरल परसेप्शन वाले आंसर्स नहीं देने. आप बता सकते हो कुछ? क्या जी क्या फायदा फिर ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ. ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਓਗੇ ਆਈਐਮ ब्रांच? चुस्त चलाक बहुत मेहनत कीते very well aware well read people are coming as your competition with much bigger scores than you. How will we convert? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਲਾਸ 'ਚ 4 ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਹੋਗੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ, आपने वीडियोस नहीं देखी होंगी अभी तक, कृपा करके जाग जाओ. ਹੁਣ ਜਿਪਮੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇपर है, उसको 2-4 घंटे दे लो, 4 घंटे इसको दे लो, पास करके 1.5 की स्पीड में चलाओ वीडियोस यूट्यूब पे. I will not discuss in this. I don't want to discuss. It's painful. Watch the video. We have discussed in detail. Punjab is a agriculture-driven state, where almost 80% people are directly, indirectly employed in agriculture. We are about, out of which almost 85% are marginal and small farmers whose land holding is less than 4 acres, whose earning is 15,000 per month, because they go for old crops like wheat and rice, where MSP is available and which are not perishable. So a farmer feels the government will lift whatever it produces. Where they are not giving him much earning, he should go for cash crops like tomato, vegetables, maize, capsicum, mushroom, etc., where he can earn 4 times more. But there is no cold storage. There are no cold storages available. There is no cold train available. There is no minimum selling price available on vegetables. He is exploited in the market because of the perishable nature of his cash crops. He is given 2 rupees for cauliflower. On the same day, we consumer we buy it for 20 rupees. So 18 rupees is the gap of the middleman, retailer and the arti, or this wholesaler. 2 rupees the farmer is getting on a day for cauliflower, and we are buying it at 25 rupees. This is where is the problem, and it needs to be addressed in a holistic way. National policy needs to be made. What needs to be produced nationally, how much? Then which state is conducive for which kind of crop? Accordingly, state-wise target should be given. Then MSPs should be given. All crops, even if it has to be for cash crops, if it has to be monthly minimum selling price, MSP, not support price, selling price, minimum buying price, MBP, that nobody can buy cauliflower less than 5 rupees or 6 rupees. And also the higher selling price, highest selling price, HSP. You can't sell it beyond 20 rupees. We as a customers are exploited. We are sold at 30-35 rupees a thing, for which farmer is buying 2 rupees, and the in between everybody is making money. Consumer is also losing, farmer is also losing. The policies need to be framed accordingly so that his income. Then food processing, bread. So many bread plants should be there in Punjab when we are a wheat dominating state. Cooperative model bread making plants. Why a kitty bond should make 50% profit alone? That let farmers make 25-30% more profit, let it retain with them. The wheat will not have to travel. They will be part of cooperative, they will earn more. Similarly, tomato paste, we have discussed there. Potato wedges, French fries, smiley. We are buying that potato in a little bit of processed form in 1200 rupees again. And farmer is selling it for 2 rupees again. This is where is the gap. Food processing. Punjab has to be too much aggressive on food processing, too much aggressive on alternate crops, diversification, etc. आज के दिन में सिर्फ 15-20% तैयारी है. आज है 4, 6, 7 को है आपका जिपमेट. लेट द जिपमेट एंड. 8th को we have a discussion again, but in between don't take it lightly. It's very big call. Yes, sir. ये
अभी तो बैच वाले बच्चे पढ़ भी रहे होंगे, उन्होंने एक्सपीरियंस भी डाले होंगे, अपना भी एक ग्रुप बन जाएगा IIMS का भी, शायद बन गया कि बनना है, तो उसमें भी कुछ कुछ वो जो बच्चे गए हुए हैं उनका भी इंटरव्यू करेंगे, बात कराएंगे आपसे, उसको करो, कॉलेज के रिव्यूज पढ़ो, बच्चों का पढ़ो, बच्चों ने वीडियो डाली होंगी, हाउ इज दिस प्रोग्राम, टीचर्स, एक डीन की इंटरव्यू है इसकी 1.5 आवर, आप दोनों को ध्यान से सुननी है पूरी। ही वॉज ए प्रोफेसर और सीनियर head of department, etc., or director in IIM Kozhikode something, senior person. He has been made the director for this BMS program. So there is a 1 hour interview. IMS ने ली थी शायद. Yes. It's wonderful. He talks everything. His confidence is so good about this program. इसीलिए last time भी line लग गया इसमें. Very good quality cream people they took. He talk. I don't want to spoon feed you what he talks. I have given you a direction. This is what you should read. You have to do your part. अब इसमें ये सारे क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी सारे दिए हुए राजा जी, ऑडिट कैसे करना, वर्किंग कैपिटल, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग सारे करने हैं। अगर ये करे, मैं अब इसको तो नहीं करा सकता, ये तो आपके 11th+2 की चीज़ें, और फिर ये इक्वेशंस को फाइंड ए डेरिवेटिव एक्सेट्रा, डेप्रिसिएशन ए सोर्स ऑफ फंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बैलेंस शीट, वंडरफुल क्वेश्चन दीज है, 80% इसी में से आएंगे अगर आपका वो ब्रांच रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपको IIM के, आपके पोर्टल में है। IIM कोझिकोडे का नहीं होगा अलग से, IIM इंदौर, IIM रोहतक है, कोझिकोडे के भी हैं, वंडरफुल तीनों, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 90% प्रोबेबिलिटी आने का। आपके IIM रांची के भी होंगे, IIM इंदौर वाले भी आ सकते हैं, कोझिकोडे वाले भी आ सकते हैं, और कौन सा रहेगा, रोहतक, जितने हैं सब आ सकते हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुड बी प्रायोरिटी नंबर 1, ब्रांच रिलेटेड आपके जो +1 +2 से रिलेटेड, then these questions should be priority 2, then current affair video should be priority 3, and all should go to hand in hand, इकट्ठा कुछ नहीं, एकदम थके हुए भी नहीं दिमाग, 1 घंटा उसमें से करो, एक ये करो, 1 घंटा वीडियो देखोगे, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशंस, डोमेन्स की मैंने 1 घंटे की 2 घंटे की डाली हुई है, वंडरफुल, 50% ज्ञान ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू टीच स्टडी देयर इज कवर्ड इन दोस इन डिटेल। पढ़ोगे तो सही, ये 3 चीजें इकट्ठी पैरेलल चलाओ। आप अभी रेडी हो इंटरव्यू देने के लिए? जब मेरा प्राइस पे हुआ था तो मुझे सीटी मिल गई थी मुझे याद है, बाकी मैंने यही किया था हमने एक बार, सर पे से ज्यादा भी लगा। तो ये अभी है अपने पास दिन, तो यहाँ फिर तैयारी कर लो, फिर 8th को यू डू इट, 7th को दे लो अपना जिपमेट, बट मेरी बात समझिए, जिपमेट आपका कब है इंटरव्यू? शुक्र, आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे है, और मैं पापा ਨੂੰ वॉइस मैसेज भी भेजा ਸੀਗਾ, पग थोड़ी टाइट बननी है अजे, अज भी पहले नालों 50% बेटर है, और 50% बेटर करनी है, ये साढ़े पंजाब की शान है पग, तो पग महरून, टाई महरून, ब्लेजर नेवी ब्लू, वाइट शर्ट, एकदम बढ़िया पर्सनैलिटी लेके जानी। रांची आपने देनी है अभी एक मॉक इंटरव्यू, चलो आओ आप ऑब्जर्व करो, बहुत मेहनत करनी पड़नी है। 8 से लेके कितने तक दिन होंगे हमारे पास, एक्चुअल का है 16, 8 दिन होंगे, मैं कहूँगा 3 मॉक इंटरव्यू और करेंगे, ठीक है, और तीनों एकदम ऐसे 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 अबाव जाना चाहिए। इन बिटवीन आई विल आल्सो फाइंड आउट मोर डाटा, बट ये जो आपके कॉमर्स रिलेटेड है ये आप ही को करने होंगे। चलो चलो, ये देखो, अब इसमें ना बैठ, इसमें देखो लिखा हुआ है कैपिटल गियरिंग रेशियो, जीरो बेस्ड बजटिंग, मैंने अंडरलाइन में कुछ किए हुए हैं जो कि वेरी गुड क्वेश्चन, और ये सारे ही गुड क्वेश्चन है। टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस, नेटवर्थ, इज इट पॉसिबल टू हैव नेगेटिव नेटवर्थ, अब ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैनेजमेंट का ही, ये आपके कॉमर्स वाले हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, प्लस इसमें ये देखो BA के भी दिए हुए हैं, BA इकोनॉमिक्स, आपने भी गुरु जी BA, मैं उधर वॉइस मैसेज भी भेजा थी आगे, BA इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन भी बड़े थे, कोरिलेशन वेरिएशन, कितना क्वेश्चन है BA इकोनॉमिक्स, यहाँ दिया हुआ सारा, कोरिलेशन वेरिएंस, आ जाओ उधर बैठ जाओ, वो शाबाश, मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये बुक आज से कोई 15 साल पुरानी है, तब भी रेलेवेंट था, सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्रॉब्लम्स इंडिया, आज भी रेलेवेंट। ड्रॉ ए बजट लाइन, डिफरेंस बिटवीन
इन डिफरेंस कर्व U इज इक्वल टू, इसको ड्रॉ करके दिखाओ. सप्लाई कर्व, does a monopolist have a supply curve, ली ग्रेगियन मल्टीप्लायर. चलो जो आपके नहीं किया हुआ वो नहीं करोगे, बट ये कहीं इकोनॉमिक्स में अगले लेवल पे आती हैं. फंक्शंस ऑफ आरबीआई एसबीआई मैंने अभी पूछा है, देखो ये 15 साल पहले भी रेलिवेंट था, आज भी रेलिवेंट. तो ये क्वेश्चन भी है इकोनॉमिक्स आपके बीकॉम वाले, मैथमेटिक्स ये कर लिया, और वो वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए आपके ब्रांच से रिलेटेड. और बुक्स को एक बार फिर से स्क्रॉल कर लो, इसी में सब आएगा. डेप्रिसिएशन, टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन. फिर जैसे क्वेश्चन मैंने पूछे हैं वो ट्रिकी के, 3 रुपए का अगर ₹3 का अगर लॉस कंपनी का बढ़ता है, प्रॉफिट कम होता है, तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन ऑल द थ्री. तो कैश फ्लो में इम्पैक्ट विल बी, ये क्या बोलते हैं, टैक्स. इफ द कंपनी income is taxable and whatever is the bracket, as per that much percentage of ₹3 will be the impact in cash flow. तो ये सब बहुत बेसिक्स हैं. ये देखो, जीएनपी, एमएनपी, what is the growth rate of GDP of the agriculture industry. Please come. Yes or no? Your name is unique. What does it mean? Well, sir, my name is comprised of two root words, Jas and Arnav. Jas is from the Punjabi word for glory, and Arnav is the Hindi word for ocean. Together they mean glory of the ocean. And my father chose that name because he is an ex-Navy personnel, and he named me that due to his fondness of the And sea. how much were your marks? 90.6. And +2? 92. मैथ था. No marks. जैसे ही आप कहोगे ना नो मैथ, तो वो आपको 4-5 क्वेश्चन मैथ के पूछेगा. बी रेडी. इसमें जो मैथ है थोड़े करके जाना. कुछ संजय सर के साथ टाइम लेना हो 1 घंटा, आप तीनों चारों इनमें के सारे क्वेश्चन कर लो. उसके बाद आधा घंटा डाउट्स ले लो, अगर कुछ नहीं समझ आएगी चीज़ उनको ही मैं बोल दूंगा इसमें से जो उनको लगता है ट्रिकी टाइप है. एक दिन करके आप लोगों को सबको बुला के 1 घंटे का एक सेशन लेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, मैथ के क्वेश्चन. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. My name is Jasarnam, and I hail from the city of Ludhiana in Punjab, where I सेकेंड हैंड उਦੋਂ भी नहीं यूज करते हुए, आज भी नहीं करते हुए. where I हाँ. studied commerce in my plus one. या फर्क पड़ गया कि नहीं? Where I studied commerce. दिस इज कम्युनिकेशन. हैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल्स. जैसे आपने सेकेंड हैंड यूज करना शुरू किया, आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव बाय 20-30%. करो. I hail from the city of Ludhiana, where I studied commerce in my plus one and plus two. My mother is an interior designer, and my father is an ex-Navy captain turned businessman. I'm passionate about business studies as a whole, and What is the business of your father? my father exports 2- and 3-wheeler parts to neighboring countries. तो ये मेंशन करने का है, ठीक है. पोकिंग क्वेश्चन ना आए. My father is into business of this, manufacturing of this, exporting of auto parts, जैसे बोला है. What are the challenges faced by your father's business? Some of the challenges faced by my father's business have to do with the current economic and political state of our neighboring countries to whom we export. For example, Sri Lanka, which was hit by a recession a few years ago and is an economy that is still on track to recover. Where does he source his items from? India or China? In India only, some of our products are sourced from Ludhiana itself and some from Delhi and Kozhikode. Which are the top rating agencies? ये For पास्ट इंटरव्यू में पूछा है मैंने. इंडियन एंड ओवरसीज. एंड इंटरनेशनल. CRISIL is India. Then overseas is S&P, Moody's, Fitch.
और ये कैसे रेट करती हैं थोड़ा सा देख लेना कंपनीज को, हाउ दे रेट कंपनीज एंड हाउ दे रेट कंट्रीज, छोटा सा है ज़्यादा नहीं है, एंड हाउ दे रेट कंट्रीज। कंट्रीज में आ जाता है, मैक्रो लेवल बता देता हूँ, कंट्रीज में आ जाता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल हेल्थ, डेब्ट बर्डन, इकोनॉमी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, लॉ एंड ऑर्डर, ब्रॉडर रिस्क फैक्टर्स एटसेट्रा। और कंपनीज में आ जाता है फंडामेंटली विच सेक्टर द कंपनी इज वर्किंग इन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, देन कंपनीज हिस्टोरिक परफॉर्मेंसेस, शेयर होल्डर कैपिटल, डेब्ट वेरियस रेशियोज, then risk assessments, etc etc, customers loyal हैं, base, growth of the segment in which a company is operating, etc. Why I am Ranchi IPM? I chose IIM Ranchi's program because of their diverse curriculum, which ranges from differential calculus to business ethics and social environment studies. Also, because of IIM Ranchi's top-rated faculty, which is also the same that has been teaching their MBA program for a number of years. What Ranchi is famous for? Ranchi is the capital city of Jharkhand, and it also neighbors multiple industrial powerhouses which are known for their production of iron ore and other minerals. How do you commute to Ranchi from Ludhiana? Uh, I could take a train from Ludhiana to Ranchi, and How since many hours it takes? Ranchi to Ludhiana would be around 7 hours. Around 35 hours होगा. It's very far off. Oh, sorry. It has to be flight. Comparison between Ranchi and Ludhiana. आपको ही पूछ सकता है, कोझिकोड एंड लुधियाना कंपैरिजन, रांची एंड लुधियाना. Ranchi and Ludhiana है are पता है, या अभी गैस मारोगे? guess गोली. what? तो बोलो कर लेना है, छोड़ो गैस मत मारो, चलो गैस भी देखते हैं कैसा मारते हैं. Ranchi and Ludhiana are similar in that they are industrial heavy towns. However, with Ranchi being the capital of Jharkhand, it also has the advantage of being a higher tier city. कुछ ऐसा नहीं है, पॉपुलेशन वाइज कंपैरिजन होना चाहिए. देन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज मेरे को लगता है रांची मॉडरेट है एज कम्पेयर टू लुधियाना. दो ही कर लो मेजर, और फिर बस इतना ही. इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन दे आर मोस्टली, ये कितना फ़र्क है ये देखो रखो. और रांची इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ झारखंड, वेयर एज लुधियाना इज़ नॉट द कैपिटल सिटी. सेकेंड डिफरेंस. थर्ड आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज, लुधियाना हैज़ वेरी बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज लाइक हीरो साइकिल्स, Vardhman, hosiery, and lot of export units also. Whereas Ranchi does have industry, but in my view, as compared to Ludhiana, it may be slightly lesser. ऐसे मोटा मोटा बता. विच स्पेशलाइजेशन आपसे तो नहीं पूछेगा क्योंकि मैं BMS में है नहीं ऐसी स्पेशलाइजेशन ज़्यादा कुछ. आपसे पूछेगा विच स्पेशलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट यू वुड लाइक टू डू ड्यूरिंग योर MBA final 2 years. Right now, I'm interested in marketing, but that might change. I will decide finally depending on Okay, what so the market जैसे मार्केटिंग situation is. बोलोगे वो कहेगा you are the product head, you are the marketing head of a company and you have to launch a new product. How will you go about? Well, the first thing I would do when launching a new product is identifying who the product is targeted towards. Uh, if then depending on what the target demographic is, I would select a medium of advertisement and a medium of बस सीधा एडवर्टाइजमेंट तक पहुंच गए. ये भी पुरानी वीडियो नहीं सुनी है या ताई है जैसा ना यार. माय डियर कॉल बड़ी इंपॉर्टेंट है और तैयारी इंपॉर्टेंट के हिसाब ना हो नहीं रही.
जब आप गए थे जेवियर, रास्ते में सुनते जाना चाहिए था आपको 2 घंटे। 2 घंटे जाते हुए 2 वीडियो, 4 घंटे का ट्रेवल था यहाँ से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से आगे आपको डाउनलोड करके यूट्यूब वीडियो देखनी चाहिए, 4-6 वहाँ इस ट्रिप में ही देख लेनी। उसके अलावा अभी तक 25 के हैं टोटल वीडियोस, 25 देख ली होनी थी। आप ऐसा आंसर देते, वो कहता यार ही इज द गाय फॉर आई एम रांची, ऐसा आंसर होना चाहिए। रोल मॉडल है नहीं बनाया, फिर की फायदा पुरानी इंटरव्यू देन का भी तो सुनने का भी। ये कहना नहीं मनना ना टीचर का, टीचर लिख के दे रहा है संदीप पुरी डॉक्टर 5 एंटीबायोटिक लिख के देगा, मैं नहीं खावांगा, मेरा पेट उत्ते का उत्ते ही रहेगा, राती खावांगा सवेरे पेट ठीक हो जाएगा। इफ ए डॉक्टर, इफ ए टीचर इज टेलिंग यू समथिंग कि ये करना है भाई, नहीं करोगे कितना होगा मेरे राजा। इंपॉर्टेंट है कि नहीं? एक गल हुई है रोल मॉडल की बड़ी बारी, और आई एम रांची पूछता भी है which are the promising new startups companies of India? I'm unsure about that. Promising, तो ये भी राजा बात हुई है क्लास में बैठ के सिर्फ इतना करके देखना है, सर ले रहे हैं इंटरव्यू, लर्निंग इज 0.5%। if you are just observing, you are not learning, you are just watching it as a movie, as an entertainment show। मैं बार बार कहना, जो उन्होंने पूछ रहे हैं, मैं इंटरव्यू ले रहे हैं, तो पूछ रहे हैं, समझो ना, अग लगती ना पिंच होता, मैंने तो पता ही नहीं है रोल मॉडल, सर उन्होंने पूछ रहे हैं। ये स्टार्टअप कंपनीज, एड टेक कंपनीज, एजुकेशन एड टेक कंपनीज, बताओ कोई पता है? Afterboards is a popular edtech company. Okay. It's a startup. Okay, next. I'm unfamiliar with more. Udemy, then physics wala, then Coursera, etc. पहले बाइजू ही था। डू यू नो व्हाई बाइजू फेल्ड? No, sir. थोड़ा पढ़ो। It had very good marketing strategy, decent marketing strategy, brand ambassador Shahrukh Khan, reach, aggression, everything good. What was wrong was product. Product was not very strong. Product was moderate. If your product is not strong, even if you do all 7 P's of marketing well, you will be ruined. We have covered marketing in detail in 2-hour video. All juice of Philip Kotler's book, Tata McGraw-Hill Marketing Management, is there in that 2-hour video. All have 80% of marketing terminologies, jargons used in marketing, everything is covered in that video. जो मार्केटिंग आपको जगदीप सर ने भेजी है प्रीवियस कैट वाले बच्चों में, जिसके बेसिस पे IIS भी, IIM लखनऊ, टॉप कॉलेजेस की सिलेक्शन भी है। Where do you see yourself 10 years down the line? 10 years down the line, I would be working in a mid-level management position in a company of repute, and would either climb the ladder further in a similar situation, or I could leave to pursue my own startup. Startup in which field do you think? I could pursue a startup in media, which is my interest. Is Indian media, which are the top Indian media houses? Top Indian media houses include the Times Network, which is Times of India, uh, Tribune, and Hindu. These are considered the holy trinity of newspapers and news distribution. There's also multiple online platforms such as Mint and similar platforms, which are Favorite subject? business studies. What does Maslow's theory say? और एक दो और ऐसी थ्योरीज है मोटिवेशनल, मुझे नाम नहीं पता, आप लोगों को पता होगा। कोई और है मास्लोस के अलावा कोई बिजनेस स्टडीज में पढ़ाई हो आपको?
अच्छा चलो Maslow's theory tell me. Maslow's theory suggests that there's a hierarchy of human needs that human beings that influence human behavior. This starts at the very bottom with basic physiological needs, followed by safety and security needs, affiliation and belonging, esteem needs, and up all the way up to self-actualization needs. Which stage you are presently? I'd say I am currently, well, all of my needs, but self-actualization are fulfilled, and I'm looking to uh, work on self-actualization by joining IIM Ranchi and improving myself. Which game you like? I'm not passionate about sports. Okay. What are your hobbies? Well, I was told that one should have four types of hobbies. Something that can benefit your health, something that gives you knowledge, something that can be a creative outlet, and something that you can monetize. Which is why I like to read for knowledge. I work out for my health, and as a creative outlet and one that I've monetized, I produce music digitally. What kind of music? All sorts of genres. I produce them digitally, although I have also mastered instruments such as the piano and drums. You also play all of them. I do. So you mention it in your introduction. So if they ask you what will you bring to the I'm Ranchi, so that time also you include this. Okay, sir, I am a drummist and I also play instruments like piano. I have also made some music, so I'll help in my team's ads, comma, creatives, designing, creatives production. I can contribute in big way. Which ad recently you have liked and why? ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਆਈ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ this music. I play piano, I play drum, I create music. I have also created some creations and I put them monetize. You earn something from them. So I did it for some requirements of others, and then I have all this makes me a creative person, which will help me in my view in the field of marketing, advertising, branding, media. ऐसा बोल देना उधर जैसे ही ऐसे बोलोगे 80% आपकी इंटरव्यू 80% चांस उस तरफ चली जाएगी कि इसी तरह जैसे मैंने वो बोला विच एड यू हैव लाइक रिसेंटली एंड व्हाई फेविकोल की ऐड देखिए कुर्सी वाली हर बंदा एक कुर्सी हर बंदा एक कारपेंटर है एक बंदे की and it is very much 99% it goes with the psyche of most of the Indian people and it is very nicely चपड़ासी की नज़र है बाबू की चेयर पे कुर्सी पे बाबू की नज़र है मैनेजर की चेयर पे कांस्टेबल की नज़र है दरोगा की चेयर पे दरोगा की नज़र है एसपी की चेयर पे तो ये कुर्सी हर तरह हर कोई कारपेंटर है इतनी कुर्सी मजबूत है फेविकोल का जॉइंट है ये टूटेगा नहीं फलाना ढिमका दे हैव all across been making very good ads. This is also quite good. आप लोग भी थोड़ा देखना इसके बारे में अच्छी एड्स आई विल आल्सो रिसर्च अ बिट वेरी गुड जो नोट्स हमारे क्या था कि the notes will continue to change circulation development. नहीं वो ऐड नहीं है ना वो तो एक इंफॉर्मेशन है पब्लिक इन्फो ऐड नहीं ऐड ये था पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो बनाया था मैं गधा नहीं हूँ दैट वाज डिसेंट बट वो भी थोड़ी डेरोगेटरी थी ऐड शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव व्हाट इज एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू ये देखो मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ हाँ एनपीवी Net present value refers to the पता है ये बोल गया फिर पढ़ना है मेरे भाई कितने क्वेश्चन कीते मैंने लगता कुछ भी कीता फिर जेवीआर एडमिशन ले आए 8 दिन हो गए लास्ट सेशन तो बाद ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਕੀਤੀ ਫਿਰ
1/100 है जेवियर एज कम्पेयर टू IIM रांची। आपका क्लब कौन सा है वहाँ पे म्यूजिक वाला, वो भी देखो IIM रांची में होएगा कोई ना कोई, तो आप उसके मेंबर बनोगे, वो भी आपको बताएं। ये वीक एरिया नॉट गुड। We redo the session on 8th after your GIPMET, then it should be very good. You agree? Yes. 8th नो डे देखना क्या पड़ेगा, मंडे होगा ना? हाँ बस ठीक, मंडे को आप इवनिंग में रखेंगे 4 से 7। कोई डाउट है तो पूछो, पर भरावा है नहीं तैयारी। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। IIM ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। You have IIM Ranchi has spent money and energy on you by sending you mail, by writing to you that come for an interview. They will they will check your these documents, they will do your interview, they will be spending lot of energy on you. ਆਪਾਂ की एनर्जी लगा रहे हैं, बस IIM Ranchi की कॉल आई है, जाके देख लांगे, ऐसे नहीं होगा। Let's hope you prepare well. आपकी अभी आनी है कॉल? सिम्बोइस से दिक्कत हुआ है। आपने एक इंटरव्यू दी हुई है शायद अंदर वो से, तो फिर अपन 8th को ही करते हैं। हाँ, और ये कितने हैं तैयारी, सारे क्वेश्चंस या नहीं, सारी वीडियोस कुछ नहीं? अगर किए हो ना तो आप क्वेश्चन भी पूछते हैं, अभी 4-5 क्वेश्चन को उसको क्लोज कर। हाँ आप क्वेश्चन पूछ